from binary to decimal, you all know. Yes or no? Yes, sir. And then addition, subtraction, two complements, multiplication, division, Boolean algebra, AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate, XOR gate, truth table, relation of logic gates, है ना. यहां तक आप कर लेंगे, relation of logic gates तक, यहाँ truth table तक कर लेंगे आप. Yes or no? AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, OR gate, XOR gate, truth table कर लेंगे. Yes, sir. It is not a very big deal क्योंकि आप लोग पढ़े हुए पहले से digital electronics में. In the digital electronics you already learned. Yes or no? Yes or no? Tell me. Yes or no? Sir. You have also studied, Yes, sir. you have also studied De Morgan law, De Morgan theorem, and relationship between the set and simplification. Already you know. Yes or no? हाँ? Break the line, change the sign. आपने पढ़ा होगा, है ना? A plus B bar, A bar dot B bar, है ना? पढ़ा ना? A plus B bar आपने पढ़ा है ना ऑलरेडी? बोलता क्यों नहीं है? तो ये टॉपिक आप खुद से इसको कर लेंगे. ओके, ये वाला पार्ट यानी यूनिट 1 यूनिट 2 अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ओके, कर लेंगे ना? हाँ या ना बोलो जल्दी जल्दी. Yes, sir. सर स्विचेस एलईडी और सिलेंडर्स नहीं पढ़े इनमें से. मैं एलईडी में बता दूंगा. मैं इसको आपने इसको कहीं नहीं रहा, इस टॉपिक को छोड़ के यहाँ तक. Yes, sir. कर लेंगे. आप ट्रूथ टेबल डी मॉर्गन, इसको मैं कल क्या करूंगा, इसको मैं 1 घंटे का कल मैं लेक्चर लेके अगर मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में खत्म हो जाए सारा. ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू कवर दिस टॉपिक पीआईडी कंट्रोलर. ये और टॉपिक खत्म कर दे रहा हूँ अभी. ठीक है, सो सी द रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड. So why we are going to start the PID controller? I have started this as a introduction to industrial controller, right? So, okay. Yes, okay. Okay. So in the why we are going to study the industrial controller. Okay, so let's say these are the blending system, where let's say this is the one of the blending system where the x1 is the concentration of any salt is going to mix in this tank. Okay, this tank, let's say the name of this tank is A, with flow rate W1, and in similar way there is a second concentration of the salt x2, and the flow rate of this concentration of the salt Wt is going to mix with W1 in this tank, right? So this is the one of the stirrer. This is the one of the stirrer. Okay, so finally after the mixing of these two salt with concentration x1 and s2 and flow rate of those two streams are W1 and W2, it is going to withdrawn. We are going to take this salt, the final solution, with flow rate of W and concentration X, right? Now let's say we want to control the concentration of the solution, right? We want to maintain some concentration of the controller, right? Concentration of the solution, right? So how do we are going to control the concentration? We are going to maintain the concentration of the solution. So we have taken one of the AT is one of the sensor, right? This the name of this analyzer transducer, right? Analyzer transducer. So this analyzer transducer will measure the quantity of the concentration. It measures the concentration of the salt in the final product. Okay, and then let's say the xm is the concentration, measured concentration of the solution, right? And this is the set point. Let's say the set point is, let's say, xs, right? The set point concentration of, we want to maintain the concentration of the solution at xs, right? So what will happen? This is the automatic controller, right? This is the AC. The AC will representing the automatic controller. Automatic controller. How the automatic controller will work? So you already know. Let's say this is the desired value RS. Okay,
and the feedback value is coming from this analyzer transducer is a concentration, right? So this is the measured value from the, let's say this is the, okay, I'm taking the fresh page so that you will understand it. Okay, let's say we have one block. Okay, let's say this is the RS, and this is the process, and the process is to blending process. Here is the process, the blending, right? Blending process where two steam is going to mix, right? And finally we are going to control the concentration, right? So we are going to measure the final concentration, that is the XM, right? And this XM is sent by the analyzer transducer, that is the feedback system, right? And this XM is sent here, right? And let's say this is the XS. So what we have taken, this is a negative feedback system. So the error will calculated XS minus XM, right? And based on this error, some controller is there. This is the controller, right? And this controller is nothing but, you know, this is the industrial controller, right? This is the industrial controller, or the industrial controller. Generally we are using the PID controller. So this controller, what will do, ये क्या करेगा, ultimately ये error, whatever the error will calculated is the signal, error signal is sent to the controller part, right? And the controller क्या करेगा, controller will act, controller will send this data to some actuator, right? Some final control element. This is the final control element, or you know, actuator, right? So what will the actuator will do? Actuator will open or close the valve as per the desired value of the flow, right? And the flow will ultimately control the concentration of the product, right? So any problem in understanding, please tell me. यहाँ तो कोई problem है किसी को? How the concentration is going to control of this blending tank? Please. बोलो भाई, अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आगे बढ़ो. नो राजीव. सर, बस सर एक डिफरेंस बता दीजिए कि न्यूमेटिक सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या डिफरेंस हो गया. Yes, pneumatic signal, basically very good question. Why we are going to taking the pneumatic signal and why we have taken the electrical signal here? It's very good question. Okay, so see, the industrial controller is basically we have designed this industrial controller with the help of, you know, this industrial controller is basically electrical controller, right? Or electronic circuit, electrical or electronic circuit, right? So it will needs the electrical signal. It will needs the electrical signal, right? So whatever we are going to measuring this final concentration, this concentration is a physical quantity, right? And with the help of this transducer, we are going to convert this physical quantity into some electrical quantity, right? And this electrical quantity, ultimately we are sending some concentration, you know, we are wanting to control the desired concentration. This concentration, the desired concentration, also in the form of some electrical signal, right? So we are taking, finally we are taking the error in the term of electrical signal, right? And this electrical signal ultimately sent to the industrial controller, that is the electronic circuit, that is made up of, that is built up of the op-amp, operational amplifier, and whatever the transistor, right? We will see how the PID controller will be fabricated with the help of op-amp. After today we will see. Today we will see. At the time will allow, right? Then this industrial controller will ultimately send the data, send the signal for controlling or for opening. Suppose करो क्या करना है आपको, कि आपको वाल्व को अल्टीमेटली ओपन करना होगा या क्लोज करना होगा, तभी तो फ्लो से कंट्रोल होगा कंसंट्रेशन, है कि नहीं? यस और नो? तो आपको अल्टीमेटली करना क्या है कि वी हैव टू ओपन दिस वाल्व और क्लोज दिस वाल्व एज पर द डिजायर्ड वैल्यू, एज पर द डाटा सेंड बाय द इंडस्ट्रियल कंट्रोलर, राइट? सो सर अब होगा क्या कि दिस इंडस्ट्रियल कंट्रोलर विल सेंड द डाटा, विल सेंड द सिग्नल for operating the actuators in the form of pneumatic signal, because the pneumatic
this final control element is a mechanical system, and this mechanical system will only operate with the help of some pneumatic signal, right? And therefore this signal is converted into the pneumatic signal. How the pneumatic signal will generate? The pneumatic signal will generate with the help of some compressor we used in the industry or the laboratory, right? And what amount of pressure will generate, or whatever that will decide by the industrial control, right? समझ में आया? Yes or no? थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ या ना Yes, बताओ sir. जल्दी से. ओके, सो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं यहाँ पर. कंट्रोलर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में आपको कहाँ गया वो? इफ जल्दी से ये देखिए, this is the final control element. If you, this is the final control element, this is the valve, okay, this is the valve body. So होता क्या है कि when आप यहाँ देखिए, this is the final control element, right? Or this final control element is always worked in on the this final control element is always work on the pneumatic signal, right? And this is pneumatic, this is the final control element, this is the final control element, this is the final control element, right? Okay, तो इस तरीके से फाइनल कंट्रोल एलिमेंट आपका काम करता है. क्लियर है? तो अब देखिए, हाउ द ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल वाल्व विल बी ऑपरेटेड. दिस इज द सेपरेट इशू, वी विल सी आफ्टर सम टाइम, राइट, इफ द टाइम विल अलाउ. सो ये तो बात हो गया एक. अच्छा जी, अब हम बात करें okay. Okay, so you have understand the what is the control objective. Objective is to keep the tank exist composition X, right? Composition X at the desired value, right? The set point by adjusting W2. हम लोग क्या करना है? हम लोग को कंट्रोल करना है किस फ्लो से? हमें कंट्रोल करना है इस फ्लो से, राइट? इसके फ्लो से वी आर गोइंग टू कंट्रोल द कंसंट्रेशन, फाइनल प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, राइट? X, ठीक है? हमें इस सपोज को इधर से वाटर आ रहा है, इधर से सॉल्ट आ रहा है, तो अल्टीमेटली हम सॉल्ट वाले को कंट्रोल करेंगे, वाटर वाले को फ्लो को चेंज नहीं करना, ठीक है? इस तरीके का कुछ हमने बना रखा है. We can control the concentration from this also, or we can control the final concentration of this product from both side also. Okay, हम दोनों तरफ लगा सकते हैं. Okay, तो यहाँ पर हमने सिंपल करने के लिए एक तरफ लगा के हमने चेक किया, ठीक है? द कंपोजिशन एनालाइजर, दैट इज द एनालाइजर ट्रांसमीटर, measure the exit composition and transmit the electronic signal to electronic feedback controller, right? Feedback controller से वो चला गया. Ultimately the controller output signal, मैं आपको जो ब्लॉक डायग्राम दिख रहा था, the controller output signal, this is the controller. The controller output signal will send the signal to the actuator, right? So the controller output signal P pressure, let's say P, this will signal J and P, and this is, let's say, E. This is the error signal. The error signal is coming from the feedback side and from the RS, right? With the help of the negative feedback, right? This error signal is sent to the controller part, and the controller will generate a signal P. This electronic signal sent to the I to P transducer. I to P transducer means current to pressure transducer, right? And this current to pressure transducer will decide what amount of valve is going to open, or what amount of valve is going to close. So where it is converted into the equivalent pneumatic signal that is compatible with the control valve. So the basic component in the feedback control loops are yes. सर वो मेरे को डाउट था कि जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब अगर एक्सएम की कंसंट्रेशन अगर एक्सेस से कम हो तो सर वो वॉल्व खुल जाएगा और वो अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन मतलब उसमें ऐड कर देगा वो आपका जो कंट्रोलर है ना. लेकिन सर अगर एक्सएम की कंसंट्रेशन अगर एक्सेस से अगर ज्यादा हो गई, फिर नहीं, ज्यादा हो या कम हो, ये फ्लूइड, आप समझे नहीं बात को? आप इसका मतलब, लेट से मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे बताता हूं, अभी भी आप समझे नहीं, नो प्रॉब्लम. लेट से हमारे पास एक, आप ऐसे समझिए, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूं. लेट से वी हैव हीटर, राइट? आप हीटर से मत लीजिए, आप इस और आसान में आपको बताता हूँ, सिंपल एग्जांपल, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट.
लेट्स से हमारे पास इधर से एक फ्लो आ रहा है और हमें क्या करने जा रहे हैं कि हमें इसका लेवल कंट्रोल करना है। सिंपल सिंपल हमें एक लेवल कंट्रोल करना है, ठीक है। एच पे हमको मेंटेन करना है। तो करना क्या होगा इसके लिए कि हमारे पास ये हमारा लेट से W1 इज द फ्लो, ठीक है, और Q1 इज द फ्लो, और W2 यहां से हमारा फाइनल फ्लो यहां से जा रहा है, इस टैंक से निकल रहा है। हमें करना है क्या, वी वांट टू कंट्रोल द लेवल ऑफ दिस टैंक एट द लेवल H. So first of all, what we have to do, we have to measure this level with the help of some sensor. With the help of some sensor, we are going to measure. Okay, measurement करने के बाद what we will do, we will send this signal to some controller, right? This is the, let's say, automatic controller, and we have some desired value, that is the set point. Okay, मान लीजिए कि हमारे पास HS set point है, हमारा HS is a set point, right? और H जो है वो मेजर्ड वैल्यू है, H जो है वो HM मान लो कि मेजर्ड वैल्यू है। HM इज द मेजर्ड वैल्यू, HS इज द सेट वैल्यू, सेट पॉइंट वैल्यू, हमें इस पर रखना है, ठीक है। यहां से दोनों कैलकुलेट करके एक एरर जनरेट किया। दिस एरर विल गिव्स द HM माइनस HS, सॉरी, दिस विल गिव द HM माइनस HS, this is the error, sorry, my mistake, sorry. Wait for a minute. Yes. So this will send this is the HM measured value. However, this will send the HS set value and this will generate error. अब ये एरर क्या करेगा, ऑटोमेटिक कंट्रोलर में जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक कंट्रोलर ये I2P कन्वर्ट करने के बाद इसमें आपको फ्लो के बाद इस वाल्व में जाएगा। अब ये बताएं, लेट से हमारे पास वैल्यू है, हमें 10 मीटर को कंट्रोल करना है, 10 मीटर पे हमको डिजायर्ड वैल्यू है, दिस इज द HS सेट वैल्यू। लेट से हमें हमारा HM वैल्यू अभी 9 मीटर है, 9 मीटर है, तो इस वाल्व को क्या करेंगे, ऑटोमेटिक कंट्रोलर क्या करेगा, ओपन कर देगा सर वो वॉल, ताकि वो किसी 9 मीटर है और हमें 10 मीटर चाहिए, तो वाल्व ओपन कर देगा, ये वाला, ये सर वाल्व ओपन हो जाएगा। नहीं नहीं सर, वो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा वाटर ऐड करेगा ना, ताकि वो लेवल थोड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि हमें चाहिए तो 10 मीटर ना। 10 मीटर चाहिए तो वाल्व को क्या करना होगा, कंट्रोलर थोड़ी कुछ करेगा, कंट्रोलर पानी थोड़ी डालेगा, नहीं जो नहीं, तो करेगा हाँ, वाल्व करेगा ना। तो वॉल भी करेगी, हाँ। तो वाल्व क्या करेगा, वाल्व बताओ, वाल्व के बारे में क्या करना है तुम्हारा, वाल्व क्या करेगा, व्हाट विल वाल्व डू। सर वॉल्व ये सर, मतलब जो हमारा, मतलब जो जिस चीज का कंपोजिशन है ये, वो चीज इसमें ऐड करेगा। नहीं नहीं, हम यहाँ पर वाल्व लेवल की बात कर रहे हैं। लेवल में क्या करेगा, हमें 10 मीटर पानी चाहिए था, 10 मीटर पानी चाहिए था, अभी 9 मीटर है, तो क्या करेगा वाल्व, इस फ्लो को, इस यहाँ से जो पानी जा रहा है बाहर की ओर, ये इसको क्लोज करेगा या ओपन हाँ सर, करेगा, ऑब्वियसली क्लोज करेगा सर। क्लोज करेगा, जब तक कि 9 मीटर से 10 मीटर ना हो जाए, राइट। 9 मीटर से 10 मीटर जैसे ही हो जाएगा, जैसे ही वो 10 मीटर को क्रॉस करेगा, 11 मीटर वाटेवर, ये वाल्व ओपन हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है, मैं ये तो समझ गया सर कि अगर जो वॉल्व समझ गया क्लोज कर ना। देगा, ताकि जब W1 उसमें कंसंट्रेशन जाता रहेगा और 10 मीटर हो जाएगा, वो ठीक है। इन सिमिलर वे यहाँ पर देखिए, इन सिमिलर वे यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर इस वाल्व को इस तरीके से ओपन और क्लोज करेगा कि इसका कंसंट्रेशन जैसे ही ज्यादा होगा, समझ रहे हैं, जैसे ही ज्यादा होगा, इसको आपको इसको ओपन कर देगा, समझ में आ रहा है। और अच्छा अच्छा। जैसे ही ये कम होगा, उसको क्लोज कर देगा, इस अच्छा, तो तरीके मतलब वो उसमें जैसे कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो गया, तो वो उसमें से। ऑब्वियसली पानी थोड़ा ज्यादा डाल देगा ना। एग्जैक्टली, ठीक समझ है में आ सर। रहा है। तो ये फ्लो पे डिपेंड करता है। तो इसमें पूरे फीडबैक सिस्टम में है क्या, व्हाट इज द इनसाइड द फीडबैक सिस्टम। सो प्रोसेस, व्हाट एवर द ब्लेंडिंग प्रोसेस इज हियर, टेम्परेचर सिस्टम, लेवल सिस्टम, व्हाट एवर, ठीक है, वो प्रेशर आपका वो प्रोसेस है, प्रोसेस होगा। देन द ट्रांसमीटर, द सेंसर विल रिक्वायर्ड, द फीडबैक सिस्टम इज रिक्वायर्ड। फीडबैक सिस्टम में क्या होगा, द ऑटोमेटिक कंट्रोलर एंड द सेंसर, राइट। And then the current to IP converter will required, IP converter is required, then final control element in the form of control valve, and then some transmission line, some wiring is required, that is the electrical and pneumatic wiring, right. And then the standard, अच्छा ये आपको जानना है, what is the standard range for the I to P converter.
to the current signal, how it is converted. So the standard signal in the industry is used 4 to 20 milliampere and 1 to 5 volts, right? So 4 milliampere will correspond to 3 psi, and 20 milliampere correspond to the 15 psi. In similar way, 4 milliampere correspond to 1 volt, and 20 milli will correspond to 5 volt. And similar way, 1 volt correspond to 3, and 5 volt correspond to 15 psi. So in this fashion, we are going to design the control system in the industry, right? So it is the convention, it is a convention, a standard range we have adopted in the industry, right? So what are the different types of now controller? Our focus is not onto the, we have already learned about how the automatic control, how the first order system, second order system, in the process we have already gone through. Okay. We will also study some sensor, okay, such as the strain gauge, tactile sensor, Hall effect sensor, and the LVDT is in your syllabus. So we will cover in 2 to 3 days. Then the final control element is there. I will send you to the PPT for better understanding. Okay, I have one more. I already uploaded the lecture on the final control element, and that is available on the YouTube. You can go through. Okay, so the second thing is our syllabus is said to cover the industrial controller. So what is inside the industrial controller? There are many types. There are mainly 3 types of industrial controller used inside the industry. This is the conventional controller, right? This is the conventional controller. However, we have so many number of advanced controller, but this is the conventional and most robust controller used in the industry. Okay, and since we are using such type of industrial control since 1700, okay, 1800, okay, from 1800 to 2020 we are using such type of controller. Okay, we are only going to change the tuning method, tuning something, and we are adopting the advanced, but all the concept are based on this industrial controller only, right? So first is the proportional controller, second is the integral controller, third is the derivative controller. These are the 3 basic controllers: proportional, integral, and derivative. And based on this proportional, integral, and derivative controller, some hybrid controller has also been developed. And this hybrid controller includes proportional and proportional plus integral, proportional plus derivative, and proportional plus integral plus derivative, PID. So this is the PI controller, this is the PID controller, and this is the PID controller. What is the meaning of this controller? I will show you after a moment. So this is the P controller, this is the I controller, and this is the D controller. So PID, PI, PD, PID. Okay, PID, PI, PD, and PID. These are the 5-6 controllers generally used inside the industry, and the main used controller is a PID controller. So what is the meaning of this controller, or how it is worked, proportional controller? As we have seen in the block diagram, if you are drawn to the block diagram, then you can understand it with the help of this. Let's say this is the, again I am telling you, this is the controller, right? And this controller have the signal coming from the set point as well as the feedback, with the negative feedback, and the signal will send. The controller is ES. Okay, this ES is nothing but the RS minus BS, okay, or whatever, and this controller will generate a signal, let's say PS, okay, and send to the, कहाँ send करेगा ये बताइए जरा फिर से, please tell me. Send to the final control elements. Final control element, right? Final control element of the actuator, right? And then the process is going to control, and then this process again, whatever the measured value is here, this measured value is measured with the help of the feedback system. Okay, so this is the fundamentals. So this PS signal, what is the error? Error is here the set point value. Okay, this is the set point value, and this is the measured value.
So set point value minus measured value is the error. Set point value minus measured value, right? So this is आपका error हो गया. Okay. And for the proportional controller का मतलब क्या है? This controller is basically proportional. Whatever the change occurred in the controller output is directly changing with respect to the error. Okay, it means PS is directly proportional to the whatever the error is changing. This, okay, I'm taking this in the form of, in the form of time domain. So PT means this signal PT. Okay, it's the Laplace form. So PT is directly proportional to the error of the signal sent to the controller. So जैसे जैसे error change होगा वैसे वैसे इसका आपका controller का output will change also. Okay, proportional का output will change also. So this PT अगर हम लिखें, this PT, if the proportionality sign will removed, it with the some constant, proportionality constant, then the some such type of expression will got. Okay, so PT will equal to the PT is equal to the KC into ET, right? PT is equal to the KC into, कुछ देर के लिए आप मान लें कि PT is equal to क्या है, KC into ET है, कुछ देर के लिए, for a moment PC is equal to आप KC into ET, और यही आपका क्या है, output है. So this is the output, and when we take this output in the Laplace, when we're going to represent this expression to the Laplace, then it becomes PS is equals to KC into ES, nothing else, right? So this expression you will find in the meaning of the books, many books in the expression as for the proportional controller. But यहाँ तो कोई problem किसी को? You want to ask any question up to this point? Otherwise I proceed. Tell me. बोलो, हाँ वो बोलते रहो, जिससे पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है. प्रमोद. यस सर. हाँ हाँ यस सर. हाँ जी हर्ष शुक्ला. ये सर आ गया समझ में. हाँ राजीव. यस सर. क्या समझ में आ गया? ऋषभ. यस सर. प्रॉब्लम कोई? एनी प्रॉब्लम? नो सर, अभी तक नहीं सर. ठीक है, आगे बढ़े. पार्थ. यस सर. ओके, सो ओके, देखिए फिर अब क्या करना है. तो अब नाउ द क्वेश्चन इज we have used PT is equals to, we have written here PT is equals to KC into ET, and ultimately PS is equals to KC into ES. That expression we have written. Okay, now होता क्या है कि जब आप रियल टाइम कंट्रोलर में जाते हैं, जब when we are going to check the real time controller, then कुछ सैचुरेटेड वैल्यू होता है. मींस जैसे ही आप the system will start at some saturated, not from the zero. Okay, तो जीरो से स्टार्ट हो नहीं रहा है, वो system will start from here, right? System will start from here. So we are taking some bias value, right? This is the steady state value. Okay, those who are not able to understand it, what is the steady state bias value, no problem, I will cover it in more precisely after some time. But okay, but आपको कुछ देर के समझना होगा कि ये एक बायस वैल्यू को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक स्टेडी स्टेट वैल्यू है, दिस इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरोस, एंड देयरफॉर वी आर एडिंग, राइट? ठीक है, तो अल्टीमेटली ये है क्या, पीटी माइनस पी बार, जो स्टेडी स्टेट वैल्यू उसको हमने माइनस कर लिया, अगेन इट बिकम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, इस तरह से हो गया, और के सी इनटू टी. सो इट इज द टोटल पी, आप ऐसे समझ लीजिए, दिस इज द पीएस. ओके, तो डेविएशन वेरिएबल है, ये डेविएशन करके हमारा कुछ आ रहा है, तो दिस इज द पीएस, एंड पीसी बिकम्स केसी इनटू ईएस. ओके, so this expression is the practical expression only given in the Seaborg book. Otherwise most of the books are only using this expression, pt is equals to kc into et. It is also right, but more accurate expression is pt is equals to p bar plus kc into et. When you will see in the lab, we have one
equipment of level control and temperature control and the concentration control CSTR in our process control lab. You can, when you will return back into the department or so, just to visit the lab, and then you see this such type of expression will occur. This expression is only theoretical, however this is a real time, more realistic, right? Okay, so now come to the proportional controller. अब proportional controller को हम लोग ऐसे समझते हैं, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन क्या है? ये आपका P है, ये आपका कंट्रोलर है और आपका एरर है. So error, the proportional controller output is directly proportional to this error, right? Now, how it will be mathematically represented? So mathematically represent कैसे करेंगे? So this is the output, this is the error. Often express the number between 0 and 100%. तो इंडस्ट्री में हम लोग जब इसको डिजाइन करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म, जब आप रियल टाइम में, सो इसको हम लोग ओपन, अल्टीमेटली ये क्या करने वाला है? प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या करने वाला है? कंट्रोलर इज गोइंग टू सेंड द सिग्नल टू द न्यूमेटिक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट or pneumatic valve. Okay, and that valve is going to open or close. So what amount of valve is going to open or close, that will decide by only the controller, and that controller will send the signal in the form of some percentage, right? 0%, 10%, 20%, 30%, 90%, 100%, 100%. Send means 100% valve is going to open. 0 means 0% valve. No, there's nothing. No valve is going to open. Matlab totally fully closed. Partially open, partially open, partially open, 30% open, 90% open. Such type of signal is sent to the pneumatic controller, right? So this is, there is another technique to represent the controller output. So the number, so we are representing the output in the form of 0 to 100%, right? So 0 to, how the 0 to 100% will going to represent? So it will send with the help of some proportional band. So what is the meaning of proportional band? You can see here. This is the on position. This is the off position. Let's say this is the off position. This is the on position of the valve, right? So at on position, let's say the valve is totally open, and at this point the valve is totally closed, off, right? So अब है क्या, ये आपका जो बैंड देख रहे हैं, इसी बैंड को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल बैंड. क्या कहते हैं जी इसको? प्रोपोर्शनल बैंड. और आपने एक थियरी पढ़ा है, एंड दिस थियरी इज द यूनिवर्सल थियरी. दिस थियरी इज यूनिवर्सल and given in the form of gain into bandwidth product is always a constant. Am I right? Am I right? Have you gone through this expression? Gain into bandwidth product is always a constant. If you increase the gain of any of the system, then bandwidth will automatically decrease. And if the bandwidth, if the gain will, you are reducing the gain, then automatically the bandwidth of the system will increase, right? So this proportional band is nothing but the bandwidth, right? Bandwidth. Okay. So when the system, when we are going to decrease, let's say bandwidth आप decrease करते चले आए, decrease और करे decrease, right? तो ultimately ये कुछ इस तरीके का आपका सिग्नल बन के आ जाएगा. On, off, बीच में कोई ट्रांजिशन नहीं, directly ऐसे. So this will gives, okay. It means when you are decreasing the proportional band, it means automatically the gain of the system will become very high. Okay, so let's say the proportional band is 0. Proportional band is very less, or you can say minimum, or you can say 0. So if it is 0, what it means? The gain means what is the value of gain at that value? Anybody? अरे बोलो भाई, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो कि रामायण चल रहा है? Very high होगा. What is the value? Sir, infinity. Infinity. Bandwidth, yes, very good. Bandwidth is, if the bandwidth is very less, very low, then it means you have increases
the value of gain at infinite. Yes or no? So, okay. So you have to remember this point. What is the point? The proportional controller will behave as on-off controller, right? On-off controller, and on-off controller is also known as bang controller, bang controller, right? Bang controller. Proportional controller we have as an on-off controller, bang controller. When? What is the condition? When the gain is very high, very high, or the bandwidth is almost zero, okay. तो इस पॉइंट पर आपका क्या होगा? आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर वो बन जाएगा आपका ऑन ऑफ कंट्रोलर, राइट? ऑन ऑफ कंट्रोलर का मतलब ये है दिस इज सेट पॉइंट, ओके। जैसे ही ये आपका इस वैल्यू को डिजायर्ड वैल्यू के ऊपर गया, ये उसको ऑफ कर देगा कंट्रोलर को, ठीक है। और जैसे ही धीरे धीरे फिर जाएगा, और जैसे ही इसको फिर ऊपर गया ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे नीचे आया ऑन हो गया, जैसे ऊपर गया ऑफ हो जाएगा, और इस तरीके से चलता रहेगा। इज इट क्लियर? या सुनो, जबकि प्रोपोर्शनल बैंड में क्या होगा? एरर जो है आपका कुछ इस तरीके से आपका चलता रहेगा स्टेडी स्टेट में, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रोपोर्शनल बैंड में कहें क्या? प्रोपोर्शनल बैंड जो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनल बैंड? सो प्रोपोर्शनल बैंड इज डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ, मैंने बताया आपको, मैक्सिमम ओपनिंग जो है 100% की है, और केसी के हेल्प से आप डिसाइड करेंगे कि कितना आपको बैंड ओपन करना है या क्लोज करना है, राइट? केसी क्या है? व्हाट इज द केसी? व्हाट इज द केसी? Constant for प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अभी देखा है, ये देखिए, व्हाट इज द केसी? केसी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हाउ द केसी विल कम? द केसी पीटी is directly proportional to ET, and when we remove this, then this will come, right? Kc into ET. So this is the term, right? So अब ये गेन है, अल्टीमेटली ये क्या है? गेन है। तो मैंने बताया गेन जैसे ही ज्यादा होगा प्रोपोर्शनल कम होगा, बैंड कम होगा। when it will maximum 100%, it will come 1। इस तरह से आपका काम है, ठीक है। Is it okay? So now come to the more realistic, मैंने आपको बताया, आपको more realistic आपका maximum and minimum, open, fully close, कुछ इस तरीके से, right? So this is the term, right? Now one of the disadvantage of the proportionality constant is, okay, how this offset value or steady state error, it always have steady state value। इसलिए प्रोपोर्शनल कंट्रोल में एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? स्टेडी स्टेट एरर हमेशा रहेगा, ऑफसेट वैल्यू हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? जरा इसकी बात करते हैं, क्यों रहेगा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? यस, लेट्स से हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है 1/1 प्लस टाउ एस। लेट्स हमारे पास ये k/1 प्लस टाउ एस। व्हाट इज द k/1 प्लस टाउ एस रिप्रेजेंटिंग? एनीबॉडी? अरे बोलो भाई, कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो ना तुम लोग, बोलो। First order. first order system. Sir, first. This is the first order system. This is the process, okay? Or let's say we have a proportional controller, and this proportional controller, what is the proportional controller? Proportional controller KC. This is the ET, this is the ES, and this is the PS, right? और हम मान लेते हैं कि the transfer function of the pneumatic कंट्रोल एलिमेंट, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट इज 1, आइडियल है वो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमारा सिस्टम है, ठीक है। दिस द कंट्रोलर, दिस इज द सिस्टम, दिस द प्रोसेस। सो अल्टीमेटली क्या बन गया? अल्टीमेटली k इंटू KC/1 प्लस टाउ, सही है ना? या सुनो, अब हमें ये बताएं कि ये अगर कोई प्रोसेस है और ये आपका फीडबैक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ESS? हाउ द ESS बी कैलकुलेटेड? स्टेडी स्टेट एरर, please tell me what the formula for calculating the ESS, steady state error? Tell me. अरे बोलो भाई, लिमिट बोलो, s टेंस टू 0। मैंने हेल्प हिंट दे दिया, आगे
Pramod, SES. S into ES. And how the ES will calculated? How the ES will calculated? What is the ES? How this ES will CS calculated? minus RS. फिर से उसको करो, सॉल्व पूरा करोगे तो क्या आएगा ये बताओ, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सर वही पूरी होल थिंग अपॉन 1 प्लस वो पूरी वाली चीज हाँ, फीडबैक है ना सर, ये तो ये सर वो होगा ना, मतलब ये के इंटू के सी अपन 1 प्लस ये टाउ इसको सपोज हमने जेड मान लिया। अरे अल्टीमेटली ES लिखेगा तो क्या आएगा? ES ये जब लिखोगे यहाँ पर ES को सॉल्व करोगे CS माइनस RS BS करके तो क्या आएगा? सर वो पूरी वाली चीज अपन 1 प्लस वाली चीज। बिल्कुल पढ़ते नहीं हो तुम लोग। दिस इज द फार्मूला, ES up is equals to limit S tends to 0 S into RS upon 1 plus GS HS. What is GS? GS is this one. This is the GS now. What is the HS? This is the HS 1. This is the HS and this is the GS. What is the RS? What is the RS? RS, let's say 1 upon S, step input. Let's say we have taken the step input. Now calculate the error. Tell me what is the error? What is the error now? Please tell me. Let's say S into RS becomes 1 upon S. 1 plus what is the GS? GS is now K into KC upon 1 plus tau S. And what is HS? HS is 1. So SS, limit S tends to 0. क्या बन जाएगा जरा बताएंगे? Tau S है ये, 1 plus 1 upon tau S है. So when you put 0, it becomes 1. So 1 upon 1 plus KC. So 1 upon 1 plus K into KC. Let's say ये constant है 1 upon 1 plus, let's say मान के चलो प्रोपो है तो 1 upon 1 plus KP, where KP is a K into KC, right? So this is the error you will got at the infinite time also. At the infinite time, steady state error means infinite time error. At the infinity, what we were going to observe the error. Okay, so this error is continuous at the infinite time. Yes or no? You are getting this amount of error at the infinite time, or you know, or the steady state error. So this error, so what is the disadvantage of the proportional controller? Proportional controller have the steady state error or offset value at the infinite. Any problem? Any question up to this point? No, sir. So what is the meaning of proportional controller is clear. What is the proportional band is clear. What is the on-off controller? Why, how, in which condition the proportional controller is going to behave as an on-off controller or band controller? It is clear, right? And how the proportional band, what is the relation between the proportional band and KC is we have already seen. We have already seen how the what is the value of the steady state error and how the steady state error will come in the picture of the proportional controller or offset will come. Okay, and then now we are going to discuss the integral controller, right? So integral controller means let's say this is the controller, right? And this is the output of the controller. This is the error. This is the error of the input of the controller, and let's say the output of the controller is PT. Okay, so ये कंट्रोलर इंटीग्रल कंट्रोल का मतलब क्या है? इंटीग्रल कंट्रोलर मींस whatever the error will coming, it is a proportional to the integral of error. Okay, इंटीग्रल ऑफ एरर जो भी आएगा उसको हम इंटीग्रेट करते चलेंगे, एरर को ऐड करते चले जाएंगे. ठीक है, ये एक्सप्रेशन होगा पीटी का. सो पीटी व्हेन द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट विल रिमूव, इट विल गिव्स 1 अपॉन एक हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट आ जाता है, जैसे इसको कहते हैं टाउ आई और ईटीडीटी, राइट? ईटीडीटी. सो ये आपका जो एक्सप्रेशन है, एंड वी आर एडिंग सम बायस वैल्यू. ओके, एंड इट बिकम्स फाइनल एक्सप्रेशन बिकम्स पीटी इज इक्वल्स टू पी बार प्लस 1 अपॉन टाउ आई 0 टू टी ईटीडीटी. रिया समझ में आया? समझ में आया रिया? यस सर. ठीक है. Yes sir, Okay. समझ में आया. So this 1 upon this tau I is known as integral time or reset time. This tau I is known as integral time or the reset time. Okay. So many numerical may be framed based on this controller, right? So आसान numerical नहीं होगा. Okay.
आपको सॉल्व करना, तो बहुत ध्यान से पढ़िए। और दिस कंट्रोलर इज ऑल्सो नोन एज द रीसेट कंट्रोलर और द फ्लोटिंग कंट्रोलर, राइट? रीसेट कंट्रोलर और द floating controller, right? So now come to the next part. So the whatever that disadvantage we have occurred in the proportional controller, that is the steady state error or offset value. So integral controller is able to remove or eliminate the offset value or the steady state error. So how this steady state error is removed, इसको जरा देखते हैं कैसे। तो let's say we have the output of the controller is pt is equals to 1 upon tau I 0 to t et dt. Okay, when you take the Laplace, then it becomes ps is equals to what, 1 upon integral है तो क्या हो जाएगा 1 upon tau I s es। ठीक है जी। अब अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन पूछे, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन? सो ट्रांसफर फंक्शन इज द आउटपुट अपॉन इनपुट। कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन क्या है? This is the PS, this is the ES. What is the transfer function? So tau PS upon ES. So PS upon ES क्या बन गया? 1 upon tau IS. So 1 upon tau IS ये हमने ले लिया। और लेट से प्रोसेस हमारा कोई फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के साथ हमने इसको कंबाइन कर, becomes GS. GS becomes what is the HS? HS is the unity feedback system. Okay. Then ESS we have calculated, limit s tends to 0. S tends to 0 s into rs upon 1 plus GSHS, right? And what is the GSHS? GSHS is, this is the 1 upon tau is into 1 upon tau is, और ठीक है ये बन गया आपका GS, और HS आपका क्या है? 1 है। जस्ट टू पुट सॉल्व दिस, क्या बन जाएगा? जरा सॉल्व करेंगे तो जरा कोई बताएगा क्या बनेगा? यस प्लीज। This will become 0. Okay, this will become 0 because s, when you put the s equal to 0, this will become infinite, or 1 infinite plus 1 is infinite. Okay, 1 upon infinite is 0. तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ आदित्य, आदित्य आ रहा है सर। तो बोलो भाई, पूछ रहे तो बता क्यों नहीं रहे तुम लोग? ओके, सो अल्टीमेटली इट मींस यहां पर क्या हुआ? व्हाट इज द एरर? यू गॉट द एरर इक्वल टू 0. इट मींस whatever the error occurred in the proportional controller is now removed or eliminated with the help of 1 upon tau is. Okay, with the help of integral controller we are able to eliminate this error, right? So this is the advantage of the integral controller. Integral controller eliminates the error, but since it is integral controller means we are going to integrate the error from 0 to t. 0 to t means हम क्या कर रहे हैं? हम लोग इसको एरर को सम अप करते जा रहे हैं। कब तक करेंगे सम अप? टी टाइम तक। टी टाइम का मतलब क्या हुआ? जब तक कि एरर 0 ना हो जाए, जब तक कि एरर 0 नहीं हो जाएगा तब तक ये इंटीग्रेशन चलता रहेगा, और जब तक ये इंटीग्रेशन चलता रहेगा उस एरर को चलने में, उसको सम अप होने में इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, and therefore it is a very sluggish controller, and therefore it is a very sluggish controller. So integral controller have a disadvantage. It provides the 0 steady state error, or in ideal condition 0 means 0 is nothing there, 0 कभी होता नहीं है. It means it provides a minimum error, but it's a very slow system. It's a very slow system. वो उसको जब तक मिनिमम नहीं होगा तब तक उसको चलता रहेगा कंट्रोलर, तब तक आउटपुट नहीं आएगा. So therefore I am saying it is a very sluggish system. However, it is the more accurate, the controller. Okay, so जहां पर टेम्परेचर कंट्रोल करना है और सिस्टम अगर बहुत स्लगिश हो तब तक वो कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक वो ब्लास्ट हो जाएगा और व्हाटएवर. ठीक है, और जहां पर आपको क्वालिटी, लेट्स से यू आर गोइंग टू कंट्रोल द टेम्परेचर इन द चॉकलेट इंडस्ट्री,
और चॉकलेट इंडस्ट्री में टेम्परेचर अगर पीआई कंट्रोलर आप यूज कर रहे हैं, इंटीग्रल कंट्रोलर यूज कर रहे हैं और वो स्लगिश सिस्टम है, तो अगर वो थोड़ा सा भी अगर क्रॉस हो गया, राइट, तो प्रॉब्लम, यू विल गॉट सम प्रॉब्लम, द क्वालिटी ऑफ द चॉकलेट विल डिस्ट्रॉयड, राइट, और इरिटेटिंग। सो ये आपका एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका चीज है। नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, तो हम लोग क्या करते हैं, एरर आपका कम हो गया किससे, इंटीग्रल कंट्रोलर से, बट प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में एक स्टेडी स्टेट एरर है, बट उसकी स्पीड सही है। द स्पीड ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज नॉट वेरी लेस, not very fast, but still we can manage, right? However, the integral controller is able to minimize the error. Okay, so we are combining the advantage of both the controller, proportional and integral controller. Proportional controller is taking the advantage of fastness, however the integral controller makes the error minimum. Okay, so based on this, the elimination of the offset is usually an important control objective. The integral controller uses itself because little control action takes place until the error signal has persisted for some time. So proportional control action, immediate corrective action, this proportional control is used for the fastness. However, the integral controller is used to minimize the error. So what is the final expression? This is the Kc into Et will provide the, but this is the proportional. And 1 upon Ti, 1 upon Ti plus 0 to T integral Et dt will provide the integral controller, right? So, and this is the bias value. So when you combine all, it becomes the PI controller, right? PI controller. Is it any problem? Is it any problem? Just tell me. We have 5 minutes. जल्दी बताओ। सर No, ये sir. ये भी सर इनपुट पे डिपेंड करेगा ना एट देन, बिल्कुल वही बात। क्योंकि अगर हम This is the क्योंकि controller. ये तो यूनिट स्टेप के लिए तो ये 0 हो जाएगा, बट अगर हम नहीं होगा पैराबोलिक इनपुट दें तो जीरो एरर नहीं हमारा होगा। इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि टाइप 0 सिस्टम है, जीरो तो नहीं टाइप होगा। 1। मैं बताता हूँ, वेट, देखिए जीरो नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं जीरो होगा, अभी आप देखेंगे। आप बात कर रहे हैं कि सर आप स्टेप इनपुट ही दे रहे हो, आप पैराबोलिक इनपुट और रैंप इनपुट कर रहे हो, एम आई राइट? यही क्वेश्चन है। यस सर। ओके, ठीक है। मैंने आपको बताया था, एक चीज और आपको मैं बता दूं कि व्हाट इज द सिग्नल, व्हाई वी आर टेकिंग सच टाइप ऑफ सिग्नल, राइट? तो ये सिग्नल है क्या, बेसिकली आपको ये पता करना। अगर ये आप समझ गए बात, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सिग्नल बेसिकली आप ये क्या है, राइट? इसको समझने के लिए आप इस बात को समझिए कि मैं आपको जो बात कहने वाला हूं, वेट अ मिनट, ये जो आपका सिग्नल है इसमें है नहीं। ओके, ये बेसिकली सिग्नल है क्या? ये सिग्नल जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये सिग्नल रियल टाइम से आपको लिया गया है। आप चेंज सिस्टम में कैसे करते हैं, ठीक है? सिस्टम में चेंज आपका हो कैसे रहा है, इस पे डिपेंड करता है। अब सिस्टम में मेनली आप क्या कर रहे हैं, आप सिस्टम में आप जब चेंज करने वाले होते हैं, लेट से आपका कोई प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कोई वाटर का फ्लो जा रहा है, तो फ्लो आप ड्रास्टिकली चेंज नहीं करते हैं, एम आई राइट? ड्रास्टिकली चेंज करते हैं क्या? आप चेंज करते हैं, लेट से आप 20 kg पर मिनट के हिसाब से, लेट से कोई फ्लो जा रहा था, उसको आप 20 kg पर मिनट से 30 kg पर मिनट करेंगे ओनली। We have a one numerical for on based on that. My first question, when I have starting the first question, why we are going to use the process control, then this question is this question. Okay, अब देखिए मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, उसके बाद मैं खत्म करता हूं, रैप अप करता हूं। तो क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस इज रनिंग अलोंग एट स्टेडी, कोई प्रोसेस चल रहा था बहुत देर से, ठीक है? और दिस क्वेश्चन हैज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द माइनर एग्जाम आई हैव गिवन। ओके, so the concentration of A in steam is 1 gram per liter, however steam 2 is a 4 gram per liter। ये दोनों अपने अपने कंसंट्रेशन से जा रहे थे, जिसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है 10 लीटर पर मिनट, एंड इधर से जा रहा है 20 लीटर पर मिनट, इधर जा रहा है, ठीक है? हुआ क्या, 3 बजे शार्प द शिफ्ट चेंजेज एट द प्लांट
प्लांट में शिफ्ट चेंज हुआ, एक नया ऑपरेटर आया और ऑपरेटर ने एक मिसरीड कर लिया। क्या मिसरीड किया उसने? मिसरीड द फ्लो मीटर्स फॉर द प्रोसेस एंड स्विचेस द फ्लो रेट्स ऑफ द टू स्टेप। उसने मिसरीड कर लिया और उसने 10 को 20 कर दिया और 20 को 10 में चेंज कर दिया। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द स्टेप इनपुट ना? यस और नो? यस और नो? ये क्या हुआ? Generally we are adopting in the process industry generally we are adopting the signal as a step input only. Okay, ये हम लोग जनरली स्टेप इनपुट यूज करते हैं इंडस्ट्री में और कोई सिग्नल यूज नहीं करते हैं. However, for the study purpose we are using the impulse signal, but generally we are using the impulse step signal, right? अब हुआ क्या, इसको जरा प्रॉब्लम समझिए. स्ट्रीम 1 को स्विच कर दिया 20 पर मिनट पे, जबकि स्ट्रीम 2 पे जो है आपका 10 पर मिनट हो गया 3:30 पे 3:30 PM 5 मिनट्स एट 3:30 मिनट्स 3:30 PM 3:30 PM पे क्या हुआ? 3:30 PM पे शिफ्ट सुपरवाइजर आया, देखा कि ये कंट्रोल रूम में कुछ गड़बड़ है. वो चाह रहा है अब उस प्रॉब्लम को डिटरमिन करना है कि अब इस प्रॉब्लम में हुआ क्या है और अब इसको कैसे ठीक किया जाएगा. बात को समझ में आया आपको? Is it clear? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमने इसको आपने किया सॉल्व है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. दैट इज अ डिफरेंट मैटर. बट आई वांट टू से हियर व्हाट वी आर यूजिंग. वी आर जनरली यूजिंग द स्टेप सिग्नल फॉर द स्टडी ऑफ पॉइंट. ठीक है ना? इतना समझ में आया? क्योंकि मोर रियलिस्टिक थिंग्स है आपका स्टेप सिग्नल, nothing else. Okay, now come to the next point. We have 2 minutes. Within 2 minutes. Okay, integral control खत्म कर दें at least. Okay, so this is the integral controller expression. कोई प्रॉब्लम यहां तक? प्रमोद कुछ पूछ रहे थे, हो गया क्लियर? डाउट? यस सर. ओके, सो अब जरा देखा जाए. ओके, सो व्हेन यू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन, सो ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ई टी का आप लाप्लास ले लें, इसका लाप्लास ले लें. तो लाप्लास जब लेंगे तो एरर ई टी को आप ई एस हो जाएगा. ई एस विल टेक द कॉमन. ओके, सो पी एस अपॉन ई एस बिकम्स के सी अपॉन 1 + 1 अपॉन टाउ आई एस. ओके, वी हैव टेकन द initial value 0. Based on this we have designed. Okay, एरर आपका हमने लिया, मैंने बताया आपको ईटी यूटी लिया, दिस द स्टेप इनपुट. ओके, बेस्ड ऑन दिस स्टेप इनपुट व्हेन यू कैलकुलेट द ईएसएस यू कैन कैलकुलेट आल्सो ईएसएस 1/1 पर टाउ एस आप ले लीजिए. और ये क्या है आपका 1/1 प्लस टाउ आई एस है. दिस इज द 1 प्लस जीएसएचएस, दिस इज जीएसएचएस एंड आरएस लिमिट एस टेंड्स टू 1/s. इसको आप सॉल्व कर लीजिए और अब देखिएगा क्या आएगा. तो एरर विल व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एरर, बताओ क्या आएगा? जरा आपको सॉल्व कर सकता है. लिमिट एस टेंड्स टू 0, पुट एस इक्वल टू 0. तो 0 करने पे नॉन जीरो आएगा. यस और नो? यस और नो? 0 तो नहीं हो रहा है, बट ये है कि इन कंपैरिजन ऑफ द प्रोपोर्शन कंट्रोलर इट विल बिकम मिनिमम, इट विल बिकम लेसर बट नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब speed will become faster and also the error becomes minimum. दोनों चीज होगा. when you have added the proportional with the integral controller, speed improve हो गया, right? और error भी आपका improve हो गया. error आपका improve हो गया, decrease हो गया, speed आपका increase हो गया. clear है? Now when you take the another type of input signal, that is a sinusoidal for the study point of view. अगर लेट से आपको साइनोसॉइडल सिग्नल आपने दिया है, ठीक है, तो आपका आउटपुट कैसा होगा? ओके, देन व्हेन यू सॉल्व दिस, व्हेन यू पुट दिस इनटू द एरर is the sin omega t. However, so when you solve this, the final expression of this pt will comes like this: sin omega t minus tan inverse 1/omega tau I. Or this is the magnitude, this is the phase angle. Okay, so this due to the minus sign omega t minus something, the final
integral PI controller behaves as a lag compensator or low pass filter. It is a lag. This is the lagging by tan inverse 1 upon omega tau I, and therefore it is called the lag compensator, and lag compensator is a low pass filter. Lag compensator is a low pass filter. Remember, okay? So we have covered today. Today we have covered up to the integral proportional controller, integral controller. Tomorrow we will discuss the derivative controller and all other PID controller. Okay, then we will wrap up and try to cover the. आप लोग उसको पढ़ लीजिए खुद से, कौन सा फर्स्ट 2 टॉपिक, दैट इज द बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब, और एंड और अगर टाइम मिलेगा तो बता देंगे, अदरवाइज वी हैव टू कवर. इज इट ओके? ये आप खुद से कर सकते हैं. ठीक है जी? Am I right? Yes, sir. Okay. चलो फिर ठीक है. थैंक यू.